Good morning, everyone. Today we'll proceed to the concept of globalization. Globalization वैश्वीकरण इसका हिंदी में नाम है और that means looking at the world uh, as a global village यानी कि पूरे विश्व को एक गांव की तरह देखना. That is the concept of globalization. So that was also one of the basic feature of first generation reform that was undertaken in the year 1991. So globalization means linking the economy of the country with economies of the other nations by means of free trade, free mobility of capital and labor. तो ये बेसिक कंपोनेंट है. ट्रेड इसके फ्री ट्रेड इंश्योर करता है बिटवीन कंट्रीज. दैट मीन्स नो कंट्री विल पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन दी ट्रेड. दैट मीन्स नो कंट्री विल पुट हैवी टैक्सेस. जो नॉर्मल टैक्स का रेट है वो होना चाहिए. अगर हैवी टैक्सेस अगर लगाए गए हैं दैट मीन्स द कंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टिंग फ्री ट्रेड. सो इंडियन इकोनॉमी undertook the first generation reforms where they opened the economy. They opened the economy. Free trade was ensured. Tax rate was reduced. That was also one of the measure taken at that time. इसके अलावा free mobility of capital. तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट करना, उनको फैसिलिटीज़ देना ताकि they could invest in our country. And because India is a developing nation and it requires capital. So if capital can be invited from say foreign nations, if the foreign nationals or citizens are encouraged to invest in India, then India could they could they could possibly create further capital, or that is called capital formation. And the next component, that was free mobility of labor also. Skillful labor that should move without any restriction in different nation. तो ये कुछ कंपोनेंट हैं इसके. फ्री ट्रेड वॉज इंश्योर्ड, फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल यानी कि जो भी इन्वेस्टर पूरी दुनिया को एक गांव की तरह देखता है और जहाँ पर भी उसको बेटर रिटर्न्स मिलते हैं, फैसिलिटीज़ मिलते हैं, वहाँ पर दे आर सपोज टू इन्वेस्ट एंड दे अर्न मनी in the form of dividend and in the form of interest. And free mobility of labor was also ensured. Free mobility means no restrictions were imposed, no, with few exceptions. अगर कोई नेशनल थ्रेट का अगर कोई मामला है तो वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, बट that is imposed in rarest of rare cases. So skillful labors, and that is no restrictions are imposed by any of the nation. So India undertook this reform. So India also opened the doors for other people, those who intend to work in India. Likewise other nations also undertook the reforms. तो ये तो जो ग्लोबल लेवल पे जो डेवलप नेशंस हैं ये तो they undertook such reforms or initiated such activities in the year or from the year 1980 itself. 1980 से ही ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी. So globalization is the process of international integration arising from the interchange of world views, product, ideas and other aspect of culture. That means ये ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की तरह देखता है. इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल है, फ्री मोबिलिटी ऑफ फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, फ्री मोबिलिटी ऑफ लेबर है. So that is also one of the features. So globalization means rapid increase in the share of economic activities taking place across the nation borders. That means whatever activities are undertaken that involves more than two nations, so that is the concept of globalization. That means if no restrictions are imposed by any country, there will be free flow of trade as well. तो इसका मतलब है opening the door of the economy to everyone, and every country, if the economy of every country is
the doors are open, then anybody can go anywhere, and the product can be sold in any country, wherever, but the condition is that they will have to uh, produce the product of better quality. So that is also one of the, um, you may say, that is one of the meaning of globalization. Then Mayer's taken, we'll talk about Mayer's. अगर हम बात करें globalization of Indian economy, so Indian economy adopted the policy of restriction after independence. That means it is called restrictions were imposed after independence. Means the economy was closed economy. हर तरह के सेल्फ रिलायंस की तरफ बात करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, जो फॉरेन कैपिटल को इनवाइट करने में बहुत सारे चीज़ों जो है उनको रिस्ट्रिक्शंस इकोनॉमी में डाली हुई थी. बट इन 1991 ड्यू टू द इकोनॉमिक क्राइसिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ओपन इट्स मार्केट फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. So new economic policies adopted had impact on every sector of Indian economy. So that was the all about the globalization of Indian economy. So now we'll discuss the major policy changes. क्या काम किए? So first was license abolishing. We have already discussed this point earlier. That means most of the industries were, the restrictions were carried off. That means except say 6 industries, no industry they require any license for producing goods and services. Second was dilution of Mrtp Act. Mrtp Act, we have already discussed this point. Mrtp Act is also kind of restrictive trade practices act. It is monopolistic restrictive trade practices act. That means in order to check the monopolies, एक अधिकार की तरह जो है, ताकि कुछ लोगों के हाथ में जो है चीज़ें ना चली जाएं, तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है डालते थे. इस केस में दोज concerns who have say capital of more than 100 crores, they were called MRTP, they were covered under this act. So restrictions were imposed by the government or under this act. So that was also diluted. तो इसको हटा दिया गया, and it is it is replaced by Competition Act 2002. और ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट वाज एनकरेज्ड. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम लगातार बात करते हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो मैनी प्रैक्टिसेस वर स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in order to encourage the foreign investors to make investment in Indian economy. Many facilities were provided. इसकी अगर हम बात करें तो इसी पॉइंट से अगर हम देखें तो there was a concept of partial convertibility of Indian rupee. That means जितने भी transactions हैं those are of revenue nature, they are convertible into Indian rupees and vice versa. दूसरे नेशंस में जो भी प्रिवेलिंग रेट है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती थी. इट इज़ कॉल्ड पार्शियल बिकॉज ओनली transactions are having nature of revenue, they are convertible. That means it does not cover capital transactions. So it is called partial convertibility. So किस तरह की रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स को कवर करता था? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो वट एवर पेमेंट दैट इज सपोज टू बी मेड टू द फॉरेन नेशनल्स और टू द पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट नेशन, अगर कुछ इंपोर्ट किया तो जो पेमेंट करनी है रुपीज़ को कन्वर्ट किया जा सकता था इन द करेंसी ऑफ दैट नेशन. इसके अलावा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई पेमेंट करनी है फॉरेन नेशनल्स को या जो सिटीजन्स हैं, दोज हु हैव इन्वेस्टेड इन इंडिया,
so in the form of interest and dividend, so that can also be converted into dollars or pound or whatever currency they want to convert in. So इसके अलावा कोई और खर्चे हैं in order to meet the regular expenses, that is also of revenue nature. तो capital nature तो वही होता है अगर जो आपने कोई इस तरह के एसेट्स में जो कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो इन्वेस्ट करना है उसमें जो कि आपको इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर a long time, and it is generally used for producing goods and services for long period of time, such as land and building, machinery, etc. So that type of investment or that type of transaction is not convertible. That's why it is called partial convertibility of Indian rupee. So that was also started in the year 1992-93. So now government is they are thinking about making it fully convertible for capital transaction also. Till date it is only partial convertibility, so that also facilitated a kind of international trade. Then next was fiscal reforms. That means fiscal reforms की बात की तो टैक्स रिडक्शन जो कस्टम ड्यूटी है इसको रिड्यूस कर दिया गया है ना. इसके अलावा आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं. दैट मीन्स एक्सटर्नल सेक्टर मीन्स दोज हु बिलोंग टू डिफरेंट नेशंस, दे वर ऑल दी एक्ट्स वर लिबरलाइज्ड. इसको आसान कर दिया गया, उनके लिए फैसिलिटीज़ दे दी गई, रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया. आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी मतलब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द external people, those who belong to different nations, those who are the stakeholders in the international trade, facilities were provided to them. Public sector reforms में FDI was allowed by government of India. तो उसमें there are many examples in India. Those public sector enterprises were handed over to those foreign companies, and there are many joint ventures. इसके अलावा Lafarge is the company. Those who are interested to take over the concern of Cement Corporation of India. इसी तरह से बहुत सारी नेशंस हैं, उन डिफरेंट नेशंस के जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनकी कंपनीज हैं. Those who are multinational companies, they have acquired public sector undertaking in India itself. So that was possible due to the implementation of globalization. So liberal foreign trade policy were foreign trade policy was made liberal. In that case custom duties, tariffs, ये सारी चीज़ें बहुत रिड्यूस कर दी गई. एक्सपोर्ट प्रमोशन that was the objective of export promotion was also undertaken. एक्सपोर्ट प्रमोशन, अगर हम इसकी बात करें एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में, एक्सपोर्ट प्रमोशन was also undertaken. So to counter the deficit in balance of payment, export promotion, in the share of Indian exports in the world trade, that the objective was to increase the share of Indian exports in the international market. So अगर deficit हटाना है तो export should be more than imports, and it is only possible when the quality of product is good and it is offered at cheaper rates in the international market, because buyers they compare it, and best quality products are sold at cheaper rates. दोनों चीज़ें देखते हैं. तो जैसे so this is also one of the basic measure taken at that time. Then next feature or next measure taken for globalization, that was freedom to repatriate. 1991 से पहले foreign investors could not take their income on foreign investment back to their country without prior approval of RBI. That means पहले उनको अगर if they before 1991, before the reforms, first generation reform, they could not
if foreign investors they invest in Indian economy, they were not free to take the income that is earned in India, that is income earned from Indian market, and they are not no, it was not possible for them to take the income back to their country. So they discourage, that norm discouraged foreign investors to invest in India. तो पहले आरबीआई से अप्रूवल लेनी होती थी एंड इट वाज द एक्ट वाज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव नेचर. तो आरबीआई था रिस्ट्रिक्शंस डालता था उसमें कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता था इंडिया में तो ना तो वो अपना कैपिटल निकाल पाता था, वापस ले जा पाता था. उसके लिए उसको अप्रूवल चाहिए होती थी आरबीआई कंडीशंस बहुत लगाते थे. इस चीज़ को फिर हटा दिया गया. नाउ देर आर फ्री टू रिपैट्रिएट देयर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स नाउ दी फॉरेन इन्वेस्टर्स they can invest anytime, they can retreat their capital, they can take back their capital anytime. कभी भी शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन कंपनीज के शेयर्स को. और इसके साथ साथ वो इनकम भी अपनी कंट्री में फ्री होकर लेके जा सकते हैं. दिस हैज़ इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सो ये आप सारे स्टेप्स थे जो कि ग्लोबलाइजेशन के लिए लिए गए, ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड इंश्योर किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री मूवमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनकरेज किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन्वेस्ट करें, जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर टेकन for globalization. So that is all for today. We'll proceed with the next topic in the coming lecture video.